Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So this is another month and और you guys know the drill. हम बात करने वाले हैं बहुत सारे empties के बारे में. हर month या 2 month में मैं ये वीडियो लाती रहती हूँ. So yeah, I have a lot of skincare, hair care, a lot of products. So discuss with you without further ado. Yeah, so this is going to be a really interesting video. So without further ado, let's get started. Okay, so before that, I want to talk about this top, you guys. This is very good. Like a top बहुत अच्छा है. I will try to insert. मैं मुझे भूल जाती हूँ, but this top is so good. And in terms of fabric also, it is very good. It is actually like इस टाइप के नहीं टॉप होते हैं, वो है ये. But I'm carrying it like that because I'm fat. So okay, so this is amazing and this fabric is really nice. It's something cotton mix. शायद ये um, I'm not able to exactly describe, but it is something cotton mix. ऐसा feel आ रहा है. अच्छा कपड़ा है ये बहुत. Link this top down because मुझे ये बहुत अच्छा लगा. So you guys will also like it. इसमें 3 shade थे. I picked up this one. It is bluish gray, we can say. Okay, so yeah, without further ado, let's get started. So I have these two body lotions. So this is same है ये और मेरी क्योंकि extra dry. If you are following me for a while, you must know कि मेरी कितनी dry skin है. So yeah, मुझे ये लगते रहते हैं. And so these are body lotions and these are full डब्बा, like बड़ा ही डब्बा 400 ml के हैं ये. And this has aloe vera in it. बहुत लाइट वेट है और गर्मियों के हिसाब से बहुत सही है. गर्मी में अगर एसी में मेरी तरह रहते हो ना तो दिस इज वेरी गुड फॉर दैट. अमेजिंग. लाइक दैट्स वाई आई हैव टू ऑफ दीज. एक्चुअली हुआ ये था दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बचा था तो मैंने सोचा यार एम्प्टी कर ही लेती हूँ उसको. एंड या दीज आर fully empty and yeah, now I can throw them. Okay, so next is this one, you guys. I am missing it already. Like literally मैंने अभी हेयर वॉश किया है बट आजकल मैं कोई मास्क नहीं अप्लाई कर रही हूँ. बट आई एम मिसिंग दिस. तो दिस इज बाय नायका. और नायका की ना तब पिंक फ्राइडे, हॉट पिंक फ्राइडे सेल कोई थी जिसमें बोगो में मुझे ये बहुत सस्ते मिले थे. एंड दिस इज रीठा शिका का हेयर मास्क. दिस इज वेरी इफेक्टिव. नायका के हेयर मास्क really good. And I was like pleasantly surprised कि नायका के जो हेयर मास्क हैं वो इतने अच्छे हैं. I was super shocked by this. सो क्वालिटी ऑफ दिस इज क्वाइट गुड एंड बहुत सॉफ्ट इससे बाल हो जाते हैं. 1-2 दिन ना हेयर मास्क से मैनेजेबल हो जाते हैं बाल इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई फ्रिजी हेयर लाइक मी. सो दैट्स दैट. एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू नायका के हेयर मास्क. दे आर लाइक सो गुड. नेक्स्ट इज दिस फेस वॉश. सो यूजुअली मेरे पास काफ़ी सारे फेस वॉश होते हैं बट दिस टाइम इट इज़ टू, क्योंकि एक बड़ा यूज किया है एक मैंने छोटा यूज किया है. सो दिस इज बाय पॉन्ड्स एंड इसका ये ब्राइट ब्यूटी वटेवर इसमें है ना, ये बहुत सही है. इफ यू वांट दैट क्लेंस फीलिंग ना देन दिस इज रियली गुड. क्योंकि इसको जो यूज करते हैं काफी फोमिंग है और एकदम स्किन से ऐसा लगता है पूरा ऑयल निकल गया है. सो इफ यू आर इन टू दैट काइंड ऑफ इफेक्ट यू विल रियली लाइक इट. और ऐसा मुझे पता नहीं क्यों मेरी ड्राई स्किन है फिर भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक एकदम अच्छे से ना स्किन से सारा ऑयल ना चला जाए. आई थिंक इसलिए मुझे एक्ने होते हैं बिकॉज मैंने कहीं आई थिंक निहारिका की वीडियो में देखा था कि ऐसे फेस वॉश नहीं यूज करने चाहिए जो इतना ड्राई कर दे स्किन को, उससे एक्ने होते हैं. तो मे बी दैट्स व्हाई आई मेक अप. टचवुड स्किन बहुत अच्छी है आजकल तो. ओके, सो दिस इज अमेजिंग. लाइक मुझे ये पसंद है एंड आई थिंक आई विल रीपरचेज दिस. सो नाइस. एंड दिस ओनली रिटेल्स फॉर 175 रुपीज एंड काफ़ी अच्छा कंपोनेंट है, काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है ये. ओके, नेक्स्ट इज for so ये है vitamin C face wash and the usual vitamin C, turmeric and for skin illumination. So this is amazing. This is a face wash पूरा यूज अप कर लिया है मैंने एंड दिस इज ऑब्वियसली अ मिनी बट मिनी भी पूरे 1-2 मंथ चल जाता है मेरा. सो बहुत बहुत सही है इफ़ यू हैव ड्राई स्किन. ये स्किन को एकदम डिहाइड्रेटेड नहीं करता है एंड विटामिन सी आजकल मैं बहुत इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ. सो विटामिन सी को आजकल मैं बहुत इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ अपने रूटीन में. तो आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड टू यूज़. मेरे पास अगर ये नहीं होगा तो आई थिंक आई विल रीपरचेज इट. बट मेरे पास 1 करोड़ फेस वॉश तो होंगे. हाँ
मजाक कर रही हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मेरा स्किन केयर ड्रॉर इज ओवरफ्लोइंग विद स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिकॉज आई एम अ स्किन केयर फैनेटिक। मैं बहुत स्किन केयर यूज़ करती हूँ, तो I enjoy this and this retails for 100 rupees. And if you want to try the mini, I will suggest you स्किन केयर का मिनी ले लिया करो, क्योंकि जो मुझे सूट हो रहा है शायद तुम्हें उससे रिएक्शन दे जाए, या जो मुझे नहीं सूट हो रहा है शायद तुम्हें वो वर्क कर जाए। तो स्किन केयर इज सो सब्जेक्टिव। मुझे थोड़ा सा तो लगता है स्किन केयर बताने में कि जो मैं बता रही हूँ कहीं उससे किसी को रिएक्शन ना हो जाए, बट दैट्स व्हाई आई ट्राई टू शो यू ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ओके, सो it's good. Mamaearth is one of my favorite brand. In terms of makeup, in terms of skincare, I love Mamaearth. So yeah, this is very good, and I will highly recommend you this one. Next product, now we are moving on to like typical skincare, and this is vitamin C फेस क्रीम एंड दिस बाय वाव। तो वाव मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ट्राई किया है वाव। एंड वाव के ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने ट्राई नहीं की, जो कि बहुत पुरानी ब्रांड है और काफ़ी स्टैब्लिश ब्रांड है, काफ़ी रेप्यूटेड ब्रांड है, बट फिर भी मेरे पास नहीं थी, तो आई बॉट दिस एंड दिस रिटेल्स फॉर ब्ला ब्ला, लेट मी सी how much this retails for. Okay, only 100 rupees, 99, which is amazing. So this has vitamin C and hyaluronic acid. Oh my god, this is my love, and I'm going to miss this. I think I should buy this but इतना स्किन केयर है मेरे पास। ओ लाइक स्किन केयर जब खत्म होता है ना, इट्स अ गिल्टी प्लेजर। ऐसा लगता है कि रहना चाहिए था तुम्हें। तो दिस इज वाज सो गुड यू गाइस। दिस हैज विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग कर देता है स्किन को। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन लाइक मी, यू विल लव इट। एंड आज भी मैंने ये यूज़ किया है फॉर द लास्ट टाइम, और इसमें कुछ नहीं है। एंड एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं ये ले गई, मैं रियलाइज इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, और प्लीज प्लीज कुछ तो निकल आना। नहीं, पर मेरा काम चल गया था। आज भी मैंने इनफैक्ट ये यूज किया है, एंड आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड टू फुली फिनिश दिस अब। और अगर मेरे 10,000 मॉइस्चराइजर खत्म हो गए, जस्ट किडिंग, अगर मेरे बहुत सारे मॉइस्चराइजर जो ऑलरेडी हैं, द न्यू वन इज दिस वन यू गाइस। दिस इज सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग एंड द कंटेंट इज अमेजिंग। सो ये मैंने ना शो पीस की तरह रख लिया, तो सही में इतना क्यूट दिखता है ना ये ऑन वैनिटी। आई वाज लाइक सो अब ये फिनिश हो गया है, तो मैंने दिस एक्वालॉजी का वन भी स्टार्ट कर दिया यूज करना। आई लव दिस, बट इन फ्यूचर आई विल परचेज दिस। जैसा कि मैंने कहा, अगर मेरे इससे सारे मॉइस्चराइजर खत्म हो गए ना अगर बाई चांस, तो मैं इसे परचेज करूँगी। सो द नेक्स्ट इज आई थिंक अ रिलीजियस थिंग ऑन दिस चैनल की एक्ने प्रोन स्किन है, तो सैलिसिलिक एसिड हर महीने खत्म करना है हमें, which is I don't know is a good thing. I think I should visit a dermat and learn skincare properly. मुझे नहीं समझ में आता स्किन केयर। तो आई डोंट थिंक सो एक्टिव्स इतना फ्रीक्वेंटली यूज करने चाहिए जितना मैं करती हूँ। आई डोंट थिंक सो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है, वैसे ये एक मिनी था। दिस इज बाय डर्म डॉग, और आई वॉज थॉरली इंजॉइंग दिस, और इसमें कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है, एंड आई एम नाउ यूजिंग दिस प्लम का सैलिसिलिक एसिड। ये भी आधा नहीं, आधा तो नहीं, बट वी कैन से 20% is finished. So I thoroughly enjoyed this salicylic acid. इतना ज़्यादा ये फेस को ना अच्छा बना देता है। कोई टेक्सचर हो, बम्पी स्किन हो, एक्ने स्कार्स हो, मुझे तो उन पे भी इफेक्टिव लगता है सैलिसिलिक एसिड, एंड आई thoroughly enjoyed it so much. I was like ठीक है, अभी एक और सैलिसिलिक एसिड है फिनिश करने के लिए। इट्स नॉट अ बिग डील, बट विल आई रीपर्चेज इट? डेफिनेटली अ मस्ट बाय। एंड अभी सेल भी चल रही है, बोगो में अगर मिल जाए तो डेफिनेटली ले लेना। ओके, सो ना बहुत ही कम प्रोडक्ट बचे हैं। दिस इज अनदर दैट मॉइस्चराइजर जो मैंने खत्म किया है। दिस डॉट एंड की का सी का नायासिनामाइड स्पॉट रिडक्शन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। तो यार ये बहुत महीनों से मेरी वैनिटी में पड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा इसको यूज अप कर ही लेते हैं। अब आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बचा है, एंड दिस वॉज माई ऑब्सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा। नायासिनामाइड इज वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट क्लियर स्किन एंड spot reduction, and it was good stuff. And if you have acne issues, acne scars, niacinamide is a must, and I thoroughly enjoyed it. Okay, so next is another Dot and Key product. So this was my love, you guys, and I am missing this also. So ये night cream है. This is Sika Calming Skin Regenerating Night Cream, Renewing Night Cream, Night Gel. Okay, this retails for 500 rupees, you guys. Best 500 rupees that you can invest in your skin.
is this amazing chart of skincare. Like this was so good, and this Thika ingredient is very calming, I must say. So if you have inflammation issue also, this will help in that. And I was like so impressed by this one. ओवरऑल ये सब यूज करके मेरी स्किन काफी काफी क्लियर हुई है, आई मस्ट से. एंड या अब तो ना थोड़ा नो मेकअप मेकअप लुक करो तो लगता ही नहीं मेकअप किया है. इट्स नॉट अ बिग डील, बट मतलब 19-20 कोई ड्रास्टिक डिफरेंस मुझे नहीं दिखता है विद और विदाउट मेकअप. That's that. Okay, so this is very good stuff. If you want clear skin now, you should definitely invest in such products. And night cream लगाया करो, और नाइट में तो स्किन केयर करा ही करो, बिकॉज जब हम सोते हैं हमारी स्किन रिपेयर होती है. तो these products are a must, in your skin care or anything. Okay. So the last I have a fragrance favorite, you guys, और काफी सारी fragrance ना on a verge of, we can say, I'm on a verge to use them up. So this is by Fragrance and Beyond, and this was La Grace, and this is pure feminine. Oh my god, this was amazing. अब कुछ बचा हो तो मैं smell करके बताऊं. Yeah, I think, oh my god, I think I got a half a pump product. Oh my god, this has that sweet fragrance, a hint of vanilla, and floral also. And it was amazing. It was so feminine, as the name suggests, pure feminine. I can totally see the feminine vibe with it. And मैंने इसको इतना यूज किया है ना, आई वॉज सुपर डुपर पम्प टू यूज दिस अप. एंड आई नो इट्स अ मिनी, बट फ्रेग्रेंस इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, और मैं इसको कभी एग्रेसिवली यूज कर रही थी इसलिए ये खत्म हो गया. बिकॉज माई फ्रेग्रेंस, मैंने एक सेपरेट बॉक्स बनाया फ्रेग्रेंस के लिए, दैट इज ओवरफ्लोइंग एंड आई नीड टू यूज माई मिनीज, तो थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा उसमें. सो या जब भी मेरे एम्प्टीज होता है ना, मुझे लगता है आह थोड़ा स्पेस वैनिटी में आएगा. सो इस बार तो काफी मतलब काफी ज्यादा स्पेस हो जाएगा मेरी वैनिटी में. बस लाइक आई यूज्ड अप सो मच ऑफ स्किन केयर. आई वाज लाइक impressed by myself. So yeah, I was like totally impressed by myself कि मैंने इतना सारा स्किन के यूज कर लिया इस बार, and one fragrance also. So maybe one of my best empties. Thank you so much for showing so much love on my previous month empties. I was like so happy. मैंने सोचा नहीं था empties में इतने views आएंगे, and now I need to accept this, that we are growing. And I'm still like, it's kind of unreal because competition बहुत है, बहुत सारे OG यूट्यूबर्स भी हैं, एंड बहुत सारे नए लोग भी हैं, मुझसे प्रिटी लोग भी हैं, मुझसे पतले लोग भी हैं. तो उसके बाद भी मेरा कंटेंट देखा जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स अबाउट ब्यूटी एंड आई एक्सेप्ट that I'm maybe not that pretty, but you guys are showing so much support on my reviews and all that stuff. I'm really happy for that. Okay, so that's pretty much it for this video, you guys. I hope you like this video. I hope you enjoy this video. If you do, please do not forget to like, share, subscribe, and I shall see you in the next one. Bye.